गोवा अलायन्स अगेन्स्ट सीएए या संस्थेमार्फत काढण्यात आलेल्या मोर्चात सीएए विरोधी नागरिकांचा मोठा सहभाग पाहावयास मिळाला। यावेळी जोपर्यंत सीएए मागे घेत नाही तोपर्यंत शासनाच्या जनगणनेत माहिती देणार नसल्याचे सांगण्यात आले। अस्सलाम इंतिफादा इनकलाब। हम वो आज़ादी के साथ शुरू करूंगी, स्लोगन साथ में दे दूंगी। अरे हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। जोर से बोलो। वो नरेंद्र मोदी और मोदी को ये तो दे हैव टू हियर द स्लोगन, दैट इज व्हाई। अरे हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। जोर से बोलो। आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। एनआरसी से, आज़ादी। सीएए से, आज़ादी। एनपीआर से, आज़ादी। ये हक हमारा, आज़ादी। हम लड़ कर लेंगे, आज़ादी। अरे तुम कुछ भी कर लो, आज़ादी। तुम गोली मारो, आज़ादी। तुम लाठी मारो, आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। जोर से बोलो। आज़ादी। आज़ादी 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 आज़ादी। बहुत खुशी से हूँ क्योंकि आपको ये एनर्जी दिखाने के लिए और इतनी ज्यादा लोग यहाँ पे हूँ। So what I have to tell to the people who are trying to suppress the struggle, who wanted to suppress the struggle, especially the government, especially to the police people who wanted to use their lathis and use their guns over us, is that if you are trying to suppress one struggle or if you are trying to suppress one protest, we will multiply. We will emerge with hundreds and thousands of the protest activities. और रैकेट चलता है ह्यूमन स्मगलिंग का, जो इस देश के अंदर बहुत लोग कम बात करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब अमित शाह कहते हैं कि वो हिंदू दलितों का स्वागत कर रहे हैं और जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो दलित विरोधी है, मैं कहता हूं कि अमित शाह दलित विरोधी है, मोदी दलित विरोधी है, क्योंकि जो दलित पाकिस्तान से मुसलमान जुड़ा रहे वो उनको इस देश के अंदर न्याय दे रहे हैं। और मैं कहता हूं कि सीए का विरोध होना चाहिए, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल होना चाहिए वो एंटी मुस्लिम है। मैं कहता हूं सीए का विरोध इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम दलित विरोधी है। वो दलित मुसलमानों को रोकता है इस देश के अंदर आने के लिए। और जाति किसने बनाई थी? जाति क्या इस देश में मुसलमानों ने बनाई थी? जाति क्या इस देश के अंदर क्या ईसाइयों ने बनाई थी? जाति क्या इस देश के अंदर जैनों ने बनाई थी? जाति क्या इस देश के अंदर किसने बनाई थी? जाति इस देश के अंदर इस देश के मनुवादी लोगों ने बनाई थी, जिसको आज बीजेपी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आज आरएसएस रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जाति आज सभी धर्म के अंदर है। For the youth who say that we don't have any hero to look up to, you know, whom do we look up to now, when they are not looking at the right places. If you see the entire freedom struggle of India, whether it is the Aligarh University students, the students of JNU, they have all participated, even the students of Goa, they have all participated in various protests across the country. One such individual who fought during the freedom struggle was Bhagat Singh. His last words to his father before he was hanged were that Indian people should continue fighting for independence, and that even if he dies, it should not get over. We must realize that the weapon or tactics used by this government against the people is nothing as compared to the formidable force that the youth has in Goa. As for the enemies of freedom, I want to tell them that peace and unity of everyone, this has been the highest aspiration of every Goan youth. Having said that, I want to end on a note saying today is a privilege to call our own, and the history will remember all the youth of Goa that they chose to fight on their legs rather than surrender on their knees. सगळ्यात पहिली आयडेंटिटी तर राखतलो जाल्यार तुवें सगळ्यात पहिली सिटीजनशिप राखची पडटली, आणि सिटीजनशिप राखल्या उपरांत तुमकां कॉन्स्टिट्यूशन रायट दितलो की तुझे जितले लॉस आसा जे तुका प्रोटेक्ट करता ताज्या बद्दल उलोवपाक तुका रायट्स दितलो. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, जे गोंया खातीर वावरूंक सोदता,
जे गोंया खातीर चेंजीस हाडूंक सोदतात सगळ्या पयलीं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी नीड टू फायट फॉर आवर ओन सिटीजनशीप. आता तेवूय OCI कार्ड वचपाचें आसा कित्याक तेणी बरयला CAA कायद्यान की OCI कार्ड जर तूं तांकां दिसता खंयचोय कायदो तूं पाडिना म्हूण तांकां दिसता जाल्यार कोर्टान जजमेंट दिल्या उपरांत न्हू तांकां दिसता जाल्यार OCI कार्डाचे तुवें खंयचोय कायदो पाडूंक ना म्हणून तुजें OCI कार्ड कॅन्सल करूंक शकता. आनी ते असेंब्लीन बोर्ड घालता की OCI कार्ड होल्डरान कांय भिरांत ना म्हणून. आनी मागीर OCI कार्ड कॅन्सल करतकच तुका आवाज ना, तूं उलोवंक शकना कित्याक तुजें कार्ड कॅन्सल तूं हिंगा घरा परतूय येवंक शकना. अगर जबरदस्ती ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो हम लोग ना चुक जाए. इसके लिए ये सब प्रोटेस्ट तो ठीक है, दे दिल से आसाम से मैं आके आप लोगों का साथ खड़ा हूँ. इसके लिए हम लोगों के पास और कोई दौलत नहीं है आप लोगों को बताने के लिए यू आर इन द राइट ट्रैक. But only thing to say that you are in a final track to show that we are united against this fascism. तांचे आवय बापायचे कडेन आनी आजी आजोबाचे कडेन हांवें सांगलें कर बरें आवय बापायची कर. एकटो म्हणपा लागलो कसो करतलो म्हाका म्हणपा लागलो. हांवें आयकलां आयकात चीफ मिनिस्टरचे आवय आनी बापायचे कडेन ना. हांवें म्हणलें कितें उलयता रे तूं. म्हाका सांगपाक लागलो जाणा तूं चीफ मिनिस्टरान आपणाचें नांव मुणकार रेजिस्टर करपाक गेला. चीफ मिनिस्टर तो वाह सगळें जाता तेजे कडेन. सगळीकडे डिटेन्शन सेंटरां उभी रावतली आणि तांकां जाय ते फक्त धर्माचे राज्य करपाक जाय. माझो तुमचा प्रश्न असा की आमची सगळी ही बाग दिस इज गार्डन आणि या गार्डनात जायची फुलां फुलल्यात, आबोली फुलल्या, मोगरी फुलल्या, गुलाब फुलल्या. ही सगळी एकाच जर हेची फुलां फुलली जाल्यार ह्या देशाची राजरंगोळी जातली. गेली 3000 वर्षां ह्या देशान आमी वस्तुचेर नांदत आसा. आमी ह्या देशाचेर किल्ले बांदले, आमी ह्या देशाचेर नरक उखल्लो, आमी ह्या देशाची सगळे जायती सगळी बांदकामां केल्लेली आसा आणि तरी आमी सिटीजन न्ही. हे कोण ठरयता? हे सगळे काल आयले सगळे राजकीय माणूस हांचो निषेध करपाक जायो. स्क्रिनी ऑन जाय आणि ताजे नंतर आमचे हे मिटिंगे खातीर ज्याने खूब कश्ट काडल्यात तो रियाज कदरी बाब तुमचे वोट ऑफ थँक्स करतलो आणि मिटींग सोंपतली. पण गडबड करून धांवपाचें ना, सुसेगाद ग्रुपांनी वचपाचें. कित्याक गडबड करुया नाका, लोक खूब आसा, वेवस्थीत घरा वचपाक जाय सगळ्यांक. हांव आतां रिझोल्युशन वाचता. We the people gathered at the rally organized by Goa Alliance against CAA, NRC, NPR at Azad Maidan in Panaji, Goa on 21st February 2020, firmly resolved to ensure that our Constitution and our laws shall always be founded and continue to be founded on the principles of justice, equality, secularism, socialism, democracy. Therefore, we are against any form of discrimination, directly or indirectly, on grounds of religion, caste, gender, class, sexual orientation, ability, age, occupation. We firmly say no to CAA, NPR, NRC, which takes away the core constitutional principles and which makes already vulnerable populations further vulnerable. We have noted the arbitrary grounds for cancellation of OCI registration. We particularly want to stress that Goa has a large number of OCI card holders. Because the persons had to surrender their Indian passports on obtaining
Portuguese passports, which they are rightfully eligible for. We are painfully aware that since land grab has been rampantly affecting the marginalized sections of society, the lethal CAA, NPR, NRC combined could render some citizens as doubtful citizens who will then be either incarcerated in detention centers, म्हणजे तुरुंगात, detention center म्हणजे फॉरेनरा खातीर तुरुंगात दवरपाची काडटा ते detention centers, or reduced to voiceless citizens who cannot question a destructive model of development that displaces them and destroys their livelihoods. आता एक ओळीची प्ले म्हज्या बरोबर तुम्ही सगळ्यांनी रिपीट करची, लक्ष देऊन ऐका. वी प्लेज दॅट till the CAA, NPR, NRC is withdrawn, we will not furnish any information whatsoever for the purposes of NPR or even for the purposes of census 2021. आणि एकदा मुद्दाम सांगता की कागद नाही दिखाएंगे नी, परत तुमचो गोंधळ जातलो, कागद मागचे ना आणि तोंडी विचारतले तेन्ना मागीर तुम्ही कन्फ्यूज जातले. म्हणून हांवें कितें सांगलां, इन्फॉर्मेशनूच दिवचे ना म्हणून आमी जो पर्यंत हे फाटी घेना आणि सेन्ससाक सुद्दां आमी इन्फॉर्मेशन दिवचे ना अशें आमी म्हणटात. परत एकदा प्लेज सांगता. वी प्लेज दॅट till the CAA, NPR, NRC is withdrawn, we will not furnish any information whatsoever for the purposes of NPR or even for the purposes of census 2021. सगळ्यांनी बसचे, देव बरें करूं. आता हांव रियाज बाग खातीर विनंती करता, ताणी